Hello, Talia. Hi, Mehru. How are you? I'm doing well. I'm so happy to see you. I feel know. like हम यहाँ पे इतने अरसे के बाद आए हैं. I know. I mean, ये स्पेस हमारे घर में है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत देर बाद आए हैं इधर. सब कुछ हिला हुआ था, ठीक है. This place was missing us. The mic was like कि आप लोग कब हमसे बात करेंगे. I think हमारा last episode निकला था like 3 साल पहले. मेरे माइक के ऊपर डस्ट थी, मुझे डस्ट साफ करनी पड़ी. बहुत ज़्यादा. Welcome back. Friends, this is 2022, new season, new episodes for this year. Talia and I are super excited to start off this first episode for 2022 after we've taken a very long break. We were all over the place. I went to Pakistan, Talia went to Pakistan. हम थोड़ी inspiration लेने गए थे पाकिस्तान कि हमारे next episodes को guide करेंगे, you know, थोड़ा बहुत मसाला आएगा हमारे episodes में जब फील्ड वर्क करने गए थे. फील्ड वर्क. मैंने जो 3-4 सेंटेंस बोले, बेसिकली दैट वाज फील्ड वर्क. वी वर ऑन साइट एंड थोड़ी बहुत हमने रिसर्च की है, बट हमारी ओपिनियंस ऑफ कोर्स बायस ही रहेंगी हमेशा. बट वी आर सुपर एक्साइटेड to come back and do these episodes again because we miss doing that. आप लोगों को पता है हमें बातें करने का बहुत शौक है. And nothing has changed, but the only thing I guess has changed, the year has changed and we are a little bit more exhausted. We are a little bit more exhausted than last year, but yet our passion does not die and we are back at it again. And one more thing, also apologies कि इतने देर बाद हम episode कर रहे हैं, but if you don't follow us on Instagram, you should. It's Arz Kiya Hai podcast on Instagram. We update that more frequently than YouTube and Spotify. So if you want to stay in touch with us, you can follow us on Instagram, and I'll put all the links down in our description as well. So we have YouTube, Spotify, and Instagram. And I also want to say, sorry, I'm taking up this space too much and I'm talking a lot because I haven't for the past 3 years. But it's all yours. Take it all, Mehru. The stage is yours. I also want to say a big thank you to those of you who have been supporting us throughout. For those of you who actually watched the whole episode. For those of you who watched the whole episode throughout and you always have good things to say, and if not good things, you always have something to add. So that is super special to us because it gives us the motivation to keep on doing this and have conversations. And as always, Arz Kiya Hai will always be and always has been a very comfortable space for us to just chat. Like हम एक दूसरे के घर चाय पे गए हैं, खाना नहीं है हमारे पास, मगर फीलिंग वही है कि हम एक दूसरे के घर चाय पे गए हैं और बस बातों पे बातें करते जा रहे हैं. So Talia, did you miss doing this? I want to know that. Are you kidding me? मेरे अंदर से इतनी बातें थी जो कहीं निकलनी चाहिए थी. I think मैं बीमार भी इसलिए हो गई थी कि I have so much inside of me जो कहीं निकल नहीं रहा था. और you know, जो हमें सुनते हैं उनको लगता है कि ये क्या है बंदियां, ना ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, ना ये कोई रिसर्चर है, ना ये कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये हैं कौन? आपको बिल्कुल ठीक लगता है, हमें वाकई में नहीं है, लेकिन हमारे पास ओपिनियंस तो हैं और हम वो ओपिनियंस शेयर करेंगे और लिव्ड एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग अ देसी वुमन. Yes. So that we will share with you. और we're happy and we're so excited to be back, and inshallah, fingers crossed, और नजर ना लगे हमें, and we are back in the business. And I think हम ये कह सकते हैं कि हमारा last season was cut short क्योंकि हमें नजर लग गई थी. हाँ, बेसिकली बहुत कुछ हुआ था, बट अगेन पास में नहीं जाना चाहिए, पर बस कैसे बोले कि इतना बिजी टाइम था कि we did not have the time. हाँ, और इस एपिसोड में हम आप पे अपना ट्रॉमा डंप नहीं करने वाले कि हमारे साथ क्या हुआ था. हम आपको आए हैं आपका इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेट करने के लिए, आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए और आपके साथ बड़ी मजे की गपशप करने के लिए. Exactly. So let's just get straight into it because this episode is going to be short and sweet, and it's going to say we hope exactly, well, we always say it's going to be short and sweet, but like 3 घंटे बाद we're like, oh, क्या time हो गया? We are getting into boom, drum roll, blah, 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 red flags. And why we are choosing this is because, bro, हर किसी में red flag नजर आ रहे हैं. Like किसी से भी मिलो आपको red flag. और red flags होते क्या हैं, Talia? Just explain it as quickly as you can.
without देखिए मैं making आपको it sound like we मैं just आपको बस hate एक everyone. analogy दे देती हूँ. I don't know आपने cartoons देखे होंगे, but you might know about the bull, right? The one where if you show show the bull the red flag, it will come chasing at you to hurt you, right? So essentially that's what a red flag is. It's essentially alarms कि आपको जो आपकी body, आपका gut feelings आपको बताती है कि something is wrong in an individual. ये signals हैं कि ये individual आपके लिए, आपकी सोशल, इमोशनल, फिजिकल वेलबीइंग के लिए सही नहीं है. तो इस बंदे से जितनी दूर हो सके भाग जाओ. और ये रेड फ्लैग सिर्फ आपके रोमांटिक पार्टनर्स में नहीं हो सकते. ये रेड फ्लैग्स आपके फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, आपके कोवर्कर्स में हो सकता है, आपके किसी भी सोशल सर्कल में हो सकता है. तो दीज आर थिंग्स टू बी ऑलवेज टू बी अवेयर ऑफ. और ऑब्वियसली रोमांटिक जो सेटिंग्स के अंदर आपने उनको अप्लाई करना तो और मजा आता है और नजर आता है. तो Mostly, I think we hear red flags like, oh, before you find a partner for yourself, these are the red flags you need to look for, or like these are the green flags you need to look for, right? And I've mostly heard it in relationships, but like I've also now seen more discourse on like friendships as well, where people are like, no, friends can make you feel uncomfortable, friends can gaslight you, friends can trauma dump on you, so it's not only partners. And honestly, red flags in family too. In a desi family, एक देसी फैमिली में जितने रेड फ्लैग्स है ना, कोई ग्रीन फ्लैग है ही नहीं, कोई है ही नहीं. बहुत ही कम है. नहीं, my mom's gonna be like, नहीं, मैंने तुम्हें बचपन में इतना प्यार किया है, तुम कैसे कह सकती हो ये स्क्रीन पे. नहीं, I know I love you too mom, but red flags खत्म ही नहीं होते. And it's not because of one individual, it's because of this whole collective देसी arena जहाँ हर किसी की कोई चीज कुछ ना कुछ टॉक्सिक है. और आई मीन नॉट दैट लाइक वो कहते हैं ना कि ओ तुम लोग गोरों की तरह बातें कर रहे हो, अब तुम लोगों ने तो देखा नहीं है कि रेड फ्लैग होता क्या है. भाई हम भी उधर ही पैदा हुए थे, ठीक है, और अभी पता है क्या, अभी हम होके आए. तो अब आप नहीं बोल सकते कि हम गोरों की तरह बात करके आए, क्योंकि हमने फील्ड वर्क किया है. वी हैव लिव्ड इन दैट प्लेस व्हिच इज फुल ऑफ रेड फ्लैग्स. कोई थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात अगर हो तो थोड़ी सी चैलेंजिंग बात तो उसमें गोरे क्यों बीच में आ जाते हैं. हाँ. क्या हमारी देसी चमड़ी के अंदर सोच समझ नहीं है? क्या हम थोड़ी बहुत बात नहीं कर सकते? गोरे ही कोई बात, यानी कि बेसिकली आप कह रहे हैं कि हम कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि गोरों वाली बात है जो आपकी बुद्धि को नहीं समझ आएगी. व्हाई इज दैट, राइट? पॉइंट टू ऐड कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये हम ज्यादा सुनते क्यों है, लेकिन आई थिंक ऑल्सो थोड़ा सा रेलिवेंट भी ज्यादा हो जाता है फॉर स्पेशली फॉर वुमेन in a romantic relationship, क्योंकि वो रिलेशनशिप ऐसी है that will have to stay with you for a long time. फ्रेंड्स को आप छोड़ सकते हो, राइट? कजन्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को भी आप कहीं ना कहीं से आप उनके साथ लिमिट कर सकते हो इंटरेक्शन. The two places where these are the most toxic, it would be in a obviously your significant other. Yeah, and if you don't identify those flags at the beginning, those relationships turn very abusive, toxic, absolutely, and will make your life a living hell. Absolutely. So, absolutely. And I'm glad कि इतना discourse है, and I'm also glad कि हम discuss कर रहे हैं, because I want to know okay, what you think are red flags. I want to know those, and maybe we should question ourselves too at the end, ठीक है, if we have any red flags. I think that would be fun. 100%. मेरे भी बहुत हैं. नहीं, मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी because I try to be green. Right. but कुछ ना कुछ तो होगा. मैंने for sure किसी को gaslight किया है हमेशा. Like I know for a fact मैंने अपने कई दोस्तों को fully gaslight किया और जानबूझ के किया कि मुझे पता है वो चिढ़ जाएंगे. But with all good intentions. But okay, I will go with the first red flag that I absolutely like, I cannot stand in friendships, okay, or like in people generally, is when the friendship is going really well and you've started joking with each other, you're super comfortable with each other, and then this one day they say something and you didn't like it, or like it was just not a good nice thing to say, and you acknowledge that and you let them know, right? And you tell them, hey dude, I don't think you should say this, or I didn't feel comfortable when you said that, or yada da da. And you know what they say? Oh, relax, dude, it was just a joke. Boom. Gaslighting. No, it was not. Okay, you need to acknowledge that you said something wrong. You need to reflect, and you need to understand that I am also trying to help you, because that's not going to go a long way. And especially if you make someone feel uncomfortable, red flag. Okay, so I absolutely hate, like, I lose my shit in that moment. I'm like, you're done.
bye-bye. We are not going to be friends. And you know what? They do it again and they're like, oh, relax. Okay, we'll not do it again. We're just joking. I guess it's a pet peeve too, right? When Yeah, and I someone think for doesn't me, listen like to you. I'm realizing like ये हम सब ने शायद ये किया होगा. Yeah. And I think I definitely have done this. I think because आप जब insecure होते हो या जो होता है आप growing up, लेकिन owning up to your mistakes is so important, right? Yeah. And it's like a skill to learn as well, and it's hard. मगर अगर आपकी personality ऐसी ही है या आपके दोस्त की ऐसी है कि वो हर बात आप ही के ऊपर डाल देता है कि आप, it's the problem is in your understanding. You're the one who will misinterpret a thing. That's a red flag. And honey, get out of that relationship. You're done. Okay, now you tell one of your red flags. I think for me, one of the biggest ones is like control. Someone who wants to control you at all times, right? आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, who, what you're doing, what you're not doing, you know, what your interests are, like हर तरह से they're like, their opinion is important, right? Or their knowledge of where you are or what you're doing with your life is so important to them. That I think is a very big red flag right then and there, right? Or control can happen in many ways. It can be like, you know, tell me where you're at, who are you with, and you know that could be a significant other, or it could also be your friends as well, right? Like they don't want to share you with anybody else, like as if you are a piece of pie that someone's sharing, right? Like इस तरह की stupid हरकतें, फोन को चेक करना, आपके messages को चेक करना, आपको follow करना, right? All of You know what I'm these are red thinking? flags. You said partner or friends, and the first thing that comes into my mind are parents. I was just gonna say that. Overprotective, possessive slash red flag parents who want to know exactly, and I'm not talking about like the young age when they should know where you're going because they want to keep you safe. I'm talking about when you grow older and they still want to know exactly who you're meeting, where you're going, what time you're going, what time you're going to come home. They're going to check your phone, or they're going to be like, oh, what's going on in your life? Like they want to know the details, dude. They want to get into the nitty gritty stuff. Though that is a red flag. Red flags for parents. Yeah, And no, how does it 100%. begin? You know, how does it begin, Talia? So like, for example, let's say we were forming a friendship and we become really good friends. And of course, people with red flags or people that are toxic, they start off really well, right? Like that's the honeymoon phase. They don't show those red flags at the initial phase of your friendship, relationship, whatsoever. So but when you get like really comfortable with each other and you know your friends, then they start putting on these requests or like control. They start showing these control behaviors. So for example, Talia, agar hum dono dost, hamari dosti begin ho gayi, we started hanging out, whatever, and then I'm like, oh acha, let's go to this restaurant on Friday night, right? And you're like, no, sorry, I'm hanging out with my other friend, blah blah. And if I was a control freak, or I'd be like, hell no, and I'd be like, hey, no, can you cancel with her? Like I've made these plans before her, so go with me instead, you know? So I'm putting on, now the onus is on you to like make that decision. And of course you're going to feel a little bit bad because now I'm a good friend of yours. You don't want to make me upset, but also you made plans with the other friend. And so now you're in that position where you have to decide. And and I just want to add, there's another quality that goes right with controlling, which is manipulative, right? So वो आपको manipulate भी कर रहे हैं. Control करने के लिए you actually have to manipulate someone, right? Yeah. So what's maybe they झूठ बोलेंगे. Oh, you know, I'm so lonely, or I have nothing better to do, or I just miss you, and watch out for the words jealous. Oh, you know, our TV dramas in particular, our dramas, movies, all of that, India, Pakistan, सब, उसमें romantic character के बारे में सबसे cute moment क्या होता है? Oh, when he gets jealous when he sees her with somebody else. Guys, that's not healthy. That's not healthy. That's a red flag. Rahul was a big red flag. Okay. ये बहुत दफा कह चुकी है, but if someone really wants to know what a red flag is Rahul from कुछ कुछ होता है, and I think Rahul from, no, I don't know about KKG, whatever. कभी खुशी कभी गम में नहीं, वो बेचारा राहुल उसमें उसमें red flag. उसका बाप red flag है. उसका नाम red flag है. Well, even in that, okay, अगर हम Bollywood की मूवियाँ ही लेंगे as analogies, we could, I think even in that movie, like with I don't know, did he lead what's her name, Rani Mukherjee in that movie, did he lead her on when he was like with so in that one moment, and I'm being very specific, you know, when I think they're hanging out at night or something like that, he's calling her cute and he's calling, like, he's playing messing around with her.
that is leading her on, and that is a red flag. Yeah. So yes, in that moment he was a big red flag, and you can see Rani's like in love with him in that. Of course वो audience को दिखाना चाह रहे हैं कि she loves him, he doesn't, he's just joking around with her, but we can see that yeah. But that's still a more progressive movie of Shah Rukh Khan, as opposed to कुछ कुछ होता है जिसमें उसने तो that was so toxic. वो तो movie ही toxic है, red flag है bro, full red flag है. और उस सबसे ending में इतना red flag है, उसको पता है काजोल का fiance है, okay, उसको पता है काजोल का like barges in and all that, और लोग कहेंगे नहीं काजोल को उसी से मोहब्बत थी, पर काजोल को इतनी अकल नहीं है कि there's this other man who's respecting her and doing exactly. और ये बंदा उसकी बीवी मर गई है, तो अब उसको वो याद आ गई है, अब उसको हाँ अब दूसरी बीवी चाहिए तो. Anyways, we digress. like always. और मेरू आप बताओ, what other मेरे में ना आते जा रहे रेड फ्लैग्स आते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ. आपके अंदर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं? नहीं, मेरे में तो बहुत है, 100%, we will get to those, but मैं दूसरों से मिलती हूँ ना, मैं उनको like क्या कहते हैं वो पूरा स्कैन करती हूँ ना, कि पूरा उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती हूँ, whatever. तो और कुछ बेहतर करने को है नहीं, तो बंदा ऑब्जर्व ही करता रहे. तो one of the big red flags that I've seen is के either when they say they're very religious, ठीक है, either when they say they're very religious or they act very religious without having to say it. Now there's two different things. So like when you meet someone and stuff like that, you'll notice their language is very much around their religion, or like, oh God forbid, you know, if I do this, this will happen. So very much religious in that sense. Or they've said no, and I'm giving an example of being Islamic and Musliman because मेरे around ज़्यादातर लोग मुसलमान ही रहे हैं growing up and now too. तो जैसे कहना कि नहीं मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ. So stuff like that. So saying that you're very religious, and then acting is like, of course, opposite to that. Exactly. So now I have an example of well, I do too. Well, I think an example is कि जैसे अब रमजान चल रहा है अभी. By the way, happy Ramzan! Oh my God! But I think जब तक ये episode आएगा तब तक ईद हो चुकी होगी. So Eid Mubarak. You never know, this episode is coming out on Eid. So Eid Mubarak, everybody. हम ईद का चांद हैं. Pun intended. Pun intended. Acha, so I think giving an example of Ramadan. So like red flag ये है कि रमजान में आपने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो गॉड को अपसेट करेगी, ठीक है, बिकॉज होली मंथ है और इसमें आपने कुछ नहीं ऐसा करना जो उनको अपसेट करेंगे. मगर जैसे ही रात के 12 बजते हैं और आखिरी रोजा खत्म होता है तो पलट जाती है दुनिया उनकी, और वो हर चीज करेंगे. रात के 12 बजे और ईद के आने के बोल रहे हो? मैं कहती हूँ इफ्तारी होने का वेट करते हैं. उसी वक्त सब कुछ बाहर आ जाता है. आई एम नॉट किडिंग. ऐसे लोग हैं जो पूरे नॉट इवन पूरे रमजान बट लाइक बातें ऐसे करेंगे कि जैसे उन्होंने इस्लाम को फुली पढ़ा हुआ है और God has accepted them. ठीक है, they didn't go to God. God has accepted them as their person. But उनकी हरकतें, for example, let's just say someone is very religious, Talia, and they're the rudest person to like servers, house help, just generally they're just very rude. How is that? I was just gonna say that. I was gonna say that's a big red flag right there. Oh my God. When you're with them, observe how they treat other people around you. Yes. It's very important. वो अपने especially those जो उनसे छोटे हैं, जो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, or someone who's less well to do financially, और हमारे कल्चर में तो आपको पता है हम अगर डिनाई भी करें कैस्ट सिस्टम भी है, राइट, हम रेसिस्ट भी हैं, सब कुछ है. तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी तरफ, या जो लोग फाइनेंशियली पुअर हैं, डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, कैस्ट से बिलोंग करते हैं, हाउ डू दे ट्रीट देम, सर्वर से कैसे बात करते हैं, यू नो, एनीबडी, लाइक watch that and see that. और even वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, या जो उनके भी सर्कल में किसी ने अगर उनको इरिटेट किया है, उनको वो किस तरह से डील करते हैं, और उनके मुंह से क्या क्या बातें निकल रही हैं. तो अब चलो आप रिलीजियस हैं और आप फुल सपोर्ट करते हैं, मगर आप गालियां देते हैं, गंदी गंदी आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, आप लोगों के बारे में गंदी बातें करते हैं. हाउ इज दैट एनी पार्ट ऑफ रिलीजन? और इसमें मैं थोड़ा अगेन डाइग्रेस करूंगी और मैं कहूंगी कि
ये बहुत एक रेड फ्लैग ये भी है जब उनके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है. एंड दैट इज वन थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट टू तालिया, कि अगर आपको इंसाइट ही नहीं है कि आप क्या, like what you're giving out in the world, how the hell, like how the hell will you survive, you know, like. Can't. And so being religious and not doing opposite of what religion asks you to do is that you have no self-awareness, and yet you still keep on telling people that you are this and this is how you live your life. मुझे याद है, like we had this one person who came to stay at our house and visit, and it's a guy, and वो ना मेरी अम्मी को butter up करने की कोशिश कर रहा था, and I remember he was on the phone with अम्मी before coming. He's like, मैं तो ऑफिस से घर आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ हर वक्त नमाज. और my अम्मी was like setting up the room for this person to come in. She was after, she's like, make sure उसके कमरे में ना जा नमाज जरूर पढ़ाओ. And I was like, I can bet you उस बंदे ने ना जान एक दफा भी नहीं पढ़ना. And I think I took जा नमाज out on purpose, or there was उस बंदे ने एक नमाज नहीं पढ़ी, वो पूरा हफ्ता रहा होगा, उसने एक दफा भी नहीं पढ़ी. And I was like, अच्छा. And not that, hey, I don't judge people. मैं कभी किसी को किसी की religiosity पे, लेकिन जो लोग ये एक तो जो virtue signaling होती है और अपने you know you want to show yourself as better than somebody in some way or form, बातें करवा लो. मेरे समझ बेटा मैं आपके हर एक इच्छी बिच्छी चीज को देखूंगी अगर आप अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं ना. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, because I was going to say too कि we are not judging कि अगर कोई religious है या नहीं है. कोई religious है, good for them dude. और मैं ये भी I mean self awareness की बात करें तो मैं पूरा साल non religious रहती हूँ, ठीक है. मैं consistently non-religious हूँ, तो again हम judge नहीं कर रहे किसी और. Like I think we're secular. Mehru and me are both secular beings, right? Like for us, like our faith is, you know, like if मैंने रोजा रखा है, मैंने नमाज पढ़ी है, that's for me, it's between me and my God, right? Or whatever belief system that I have. I don't need to go around telling other people this and that, right? So this can come in the form of religion, this can come in the form of education, right? Let's say कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, जो भी है, मैं हर वक्त दूसरे को put down करती रहूँ या हर वक्त बताती रहूँ, जी मैंने तो आज 4 essays लिखे हैं, आज तो मैंने like 15 क्या कहते हैं आर्टिकल्स पढ़े हैं आज. और या जैसे आप अब कोई जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ तालिया, and you say to me, oh मैं तो कर चुकी हूँ ये कब का. Exactly. That is also like, that's a red flag, like putting the other person down as well, right? So ये उसी के अंदर है कि जब आप एक वो superficial way of दिखा रहे हैं अपने बारे में और आप दूसरे को put down की जा रहे हैं, आप चाहे जितनी मर्जी वो बंदा कर देना, and then what happens is then you in turn become that person who wants to constantly seek that other person's approval. So you will keep coming to them and you're trying to show them like, oh look, I did this, and they'll be like, हाँ मैं जब वहां पे थी ना मैंने ये किया था, or I got this, or I got that. And I know so many people, और देसी लोग ये इतना करते हैं, अपनी ही बस शोखियां मारते रहते हैं और दूसरे को like you know हर वक्त put down करते हैं. And I think these are definitely really big red flags. Watch out for these in your personal relationships, your social, and even in your work relationships as well, right? Your managers can do that as well. Like when they're, for example, you did something big at your work, right? And you feel like proud of yourself, but your manager's like, yeah, but you didn't do XYZ, or when maybe you could do it this way or that. There's one way to get constructive feedback. And I have one manager which is where the Mehru knows. मैं आपके मैनेजर के बारे में सोच मुझे आपका ट्रॉमा याद आ रहा है. मैंने अपनी पास्ट में बहुत ट्रॉमास भुगते हैं, इसलिए मैंने जॉब्स भी बहुत बदली. नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ awareness, sorry, we're not trying to spread awareness about relationships and friendships. Even in your work life, there are so many red flags. What is your company asking you to do? Are those expectations way out of like what you can actually do? Is that something that was discussed when you started this position? Now they're asking you for different things, switching around a lot, giving you directions, but then when you come back with the results, they're like, no, we didn't give you those directions. So are they like messing around with you? Those are red flags. Absolutely. Or like, you know, making you do all the work, but then them taking the credit for it. That is a big one too. You know, not for example, and then also like in the workplace, it can also be compensation. So for example, like you're not being adequately compensated for the work you're doing. लेकिन वो हर तरह से justification लेकर आएंगे आपको दिखाने के लिए कि you are not, you know, and we can do a podcast on that some other day on like how to negotiate and how to, you know, look after yourself. लेकिन these are also signs I'm in the middle of negotiation right now, actually.
Atta girl. And I was So- like, me just writing an email about negotiation, मुझे I think 3 घंटे लगे थे कि मैं भेजूं कैसे इसको, like what will I sound like or what will I come across as, but I was like, okay मेरू सारे करते हैं तुम भी कर दो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा तालिया बताओ क्या होगा. Honestly, I have like it was hard for मैंने पहले मुझे जॉन सी जॉब मिलती थी ना, like मैं ले लेती थी चुप करके, like मुझे कुछ नहीं, मैं पूछती भी नहीं थी, और हम रेड फ्लैग से जॉब की कॉम्पनसेशन में आ गए हैं. लेकिन फिर उसके बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग नहीं यार, लाइक ये तो गलत है कि दे आर जस्ट गोना यूज मी. ओके, कई दफा ये हो सकता है कि जॉब उन्होंने ना एक पे बैंड होता है जिसके अंदर उन्होंने रखी हुई है, लाइक लेट्स से कोई जॉब है 60,000 से लेके 85,000 के लिए बजटेड, ठीक है. उन्होंने जब आपको ऑफर किया, उन्होंने आपको 60,000 ऑफर किया, आपने 60,000 ही ले लिया, बट उनके पास $85,000 तक है उस पोजीशन के लिए, आपने यू जस्ट लेट गो ऑफ ऑलमोस्ट 25,000 दैट आप और ले सकते थे. सो बी विलिंग टू लाइक फर्स्ट फाइंड आउट, और फिर कई दफा आपको दिल कम बैक एंड से हे सॉरी वी ओनली बजटेड दिस मच फॉर दिस जॉब. तो फिर या तो आपको वो जॉब बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप करना चाहते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आप फिर ये देखें कि आपको लीव ज्यादा मिल सकती है, आपको किसी और तरह के बेनिफिट्स दे सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो भी, खैर उसके साथ, मगर हैव दोस कन्वर्सेशंस एंड दे शुड नेवर मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट, राइट. और हाँ, ये हो सकता है कि आप नो कि आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपको खुद भी इतना पता होना चाहिए कि आपने इतना काम किया है. लेकिन मैं ऐसी जगहों पे भी काम कर चुकी हूँ कि मुझे पता है कि जब मैंने और मेरे अपने कॉलीग्स ने अपना लाइक पूरा आके देखे, परफॉर्मेंस लेकर आए, उसको बस डिसमिस कर दिया, हम बाद में बात करेंगे. हे दैट राइट वाज लाइक ओके, ये रेड फ्लैग है, आपने अगर अभी भी नहीं किया, आडियोस, आई एम आउट ऑफ हियर. या राइट, तो आपको अपने ऊपर इतना फेथ होना चाहिए. in negotiations, and never sell yourself short. Never. Like, I guess a lot of people apply for jobs and go into this saying ke, no, we really need a job, the first person that hires us will take it. Good for you. Yes, sometimes it's the needs are like that, but you are also providing the service that they want. So don't sell yourself short. Always go for the next job, because you are not going to lose anything. You never had that job in the first place. So it's okay. Yeah, and if you need it, like, but always leave room open for negotiation. Like, don't ever take your first offer. That's first thing. जिंदगी में कहीं भी कोई भी आपको पहली ऑफर देना, उसको कभी भी मत लो. If they've already selected you and gone, especially अगर hiring process के through गया ना, रूल है, पोकर का भी रूल है ना कुछ ऐसे. नहीं, मैं क्या कहते हैं, ऐसी गेम्स नहीं खेलती. मैं सिर्फ रेड फ्लैग वाली गेम्स खेलती हूँ, ठीक है. अच्छा, मैं बस लोगों को गैसलाइट करती हूँ. हाँ बिल्कुल. मेरे रात की पार्ट टाइम जॉब है लोगों को ऑनलाइन जाके गैसलाइट करना. अच्छा, bringing back to red flags, I wanna talk about our own if you have any. जरूरी नहीं है कि हैं, but मैं for sure एक अपना कहूंगी कि मेरा एक रेड फ्लैग है कि मैंने गैसलाइट किया है 100%, जानबूझ के भी किया है, और शायद अनइंटेंशनली भी किया है लोगों के साथ, जब मैं खुद एक फेज में थी कि ओ जोक्स आर जोक्स, take them or leave them, ठीक है. मैंने that's a big red flag. So for sure I know कि मैंने कई दफा intentionally भी किया होगा, unintentionally भी किया है. हाँ, अब जिसके साथ मेरा comfort level ज्यादा है, उसके साथ of course I'm way more toxic. Like Talia, like I give it to you on your face basically. I'm like, ये गलत है, ये गलत नहीं है, blah 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 blah. So that's, I mean, a red flag for when you're starting a friendship. But so I think that is one of mine. I've gaslighted people a lot. मुझे मजा आता है उसमें gaslight करके. But I'm thinking of something else, like what else? मेहरू इतनी perfect है, आपके अंदर कहाँ से कोई red flags होंगे? अच्छा, ग्रीन फ्लैग मेरा ग्रीन फ्लैग एक ये है कि आई थिंक आई एम अ वेरी गुड लिसनर, ठीक है. मैं लोगों की बातें प्रॉपरली फुल स्टार्ट बिगिनिंग प्लॉट से एंड कंक्लूजन तक सुन सकती हूँ, और फिर या तो मैं उस पर ऐड कर सकती हूँ या कोई एडवाइस दे सकती हूँ या जस्ट सुन के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ. तो आई थिंक वो मेरा एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग रहा है, एंड दैट इज व्हाई माय फ्रेंडशिप्स हैव बीन सक्सेसफुल. I think that is one of my green flags के मेरी listening skills और क्या कहते हैं active listening skills बहुत अच्छी हैं मुझे लगता है. और रेड फ्लैग में और कुछ नहीं सोच सकती, बट गैस लाइटिंग इज वन ऑफ देम. मैंने जानबूझ के बहुत कभी कभार लोगों को आपको उनको वापस उनकी क्या कहते हैं उनको लाइन पे लाने के लिए ना करना पड़ता है, ठीक है. जब वो कुछ ज्यादा क्या कहते हैं ओछे नहीं हो जाते लोग,
कुछ अपनी हद से ज्यादा जा रहे होते हैं, तो फिर आपको कलेक्टिवली आपको उनको वापस लाना पड़ता है उनकी चेयर पे. तो उस मोमेंट में मैंने बहुत गैसलाइट किया. आई मीन इट्स अ रेड फ्लैग, बट आई थिंक इट वाज नीडेड एट दैट मोमेंट. हम सबको लगता है हम जो कर रहे होते हैं नीडेड है. या आई थिंक मेरे अंदर जो रेड फ्लैग है, आई थिंक आई रियलाइज्ड इट एंड आई बीन वर्किंग ऑन इट क्वाइट अ बिट. जब मैं यंगर थी स्पेशली, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ता था, अभी भी काफी चढ़ता है. But I used to get very angry, especially like अगर हम कुछ like organize कर रहे हैं events वगैरह, and like I've always been like the group mom. तो हर किसी को डांट देना जो भी, and like been very opinionated, right? And I've always like, I think I was in my efforts of trying to be a perfect desi girl, or you know, to us tarah se living my life a certain way. So I think I made people feel unsafe around me. I felt, and and I'm a very caring person, and I think my friends will also say that. Like I genuinely care, and I genuinely want the better for everybody and all that. But I think when I was younger, it was what I thought was better or what I thought was best, or right? it can come off as controlling, like controlling, arrogant, or whatever you can say. And a lot of times I've come across people have said, like, you know, I seem like as if I was arrogant, but I'm truly like, it's not that I feel like I'm better than anybody. I think it was, I had this matrix of what a person should do. So I used to look at everything like that. So I think I made people feel unsafe. So, and that's another red flag. Like if, so I can, that's a very, on the, I would say on the continuum of being unsafe, that's not as high as someone who physically make you feel unsafe. So that also happens. Or intentionally wants to make you unsafe. हाँ, जब उस इंसान को गुस्सा चढ़ता है कि आप actually physically या emotionally डर जाते हैं, that's also a red flag. So I used to get very angry, and I think there was a point, I remember I was once directing a play as well, and a lot of good friends of mine were part of that play. And like I remember there was just a lot of mismanagement, and then I would get really angry. And part of it I thought was just funny or whatever, like people are just taking it as a joke, like gaslighting, like acha bhul jao. But then I realized I probably did hurt people's feelings, and it was not okay. And I've always been sorry about that. And I think since that time I've been actively working on myself, and I try my absolute best to not make people feel uncomfortable around me or unsafe around me, or not to feel like I'm judging them. And मगर I guess ये भी एक दूसरी बात है कि judgment pass करना, like people say, oh, I'm non-judgmental, or not me, like I mean if someone वैसे भी कहते हैं could be I don't know how that's possible. Like when you look at somebody or something, like Talia, for example, first of all, thank you for sharing that. That was so sweet. Like I've been, like I think I've come across as arrogant, and I apologize. This is my public apology. It is my public apology. Sweet. But I think, okay, so like for example, if you pass a judgment, it also comes from this person's, like for example, if I'm near you at that time and I listen to this judgment you've passed, it will come from my insecurities too, right? Like if there's something that I feel uncomfortable about, so I've already know, like, oh no, that means she's going to judge me too. So I mean, yes, we don't want to trigger anybody, and yes, we should be very mindful of what we say around everyone, but it depends on the individual and their insecurities and what they deem to be judgmental or not, right? You might be giving an opinion, but they're like, whoa, that opinion is not welcomed. Exactly. And whoever's listening to this, and whoever's in my personal life and ever has felt like I'm being arrogant, and I tried to say this many times, I'm truly not someone who thinks I'm better than anybody. I'm just a big nerd. That's all it is. She's a dork. I am. Give her a break, guys. Give her a break. I am. I'm just a dork. Like if we're talking, and I love intellectual stimulating conversations. So like, you know, whenever हम लोग कपड़ों के बारे में बात करेंगे, and I'll start talking about supply chain management or something, or like, you know, sustainable sourcing. हाँ, मैंने realize किया कि हम like शायद कहते हैं, ओह तालिया आपका कुर्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा कहाँ से लिया, blah blah blah. तुम्हें पता है इस कंपनी के पीछे क्या हो रहा है, इसकी फैक्ट्री कितनी एक्सप्लॉइट कर रही है इसके लेबर को, मैं फिर भी ले रही हूँ. नहीं आप वो गलती से ले लिया, आइंदा नहीं लेंगे. We're very careful about that, but I love कि हमारी conversations का वो एक materialistic world से proper पीछे पॉलिटिकल एरिना पहुंच जाता है, और मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ. और like हम अपने सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे और क्या चीज कहाँ से आ रही है. अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है हमारी कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट, तो वेयर इज द फन, डूड? और आई थिंक जो लोग आपका like
एक तो ये वो बात है ना कि आपसे वो इस तरह एंगेज नहीं करते, एंड आई थिंक फॉर मी आई एम आल्सो लर्निंग कि हर जगह बात करने की जरूरत नहीं है, दूसरा बंदा वुड फील लेस। लेकिन मैंने एक ये देखी है कि जो हमारे देसी कल्चर है उसके अंदर आप लोगों को पुट डाउन भी इतना करते हैं और आप उनका मजाक बना लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरू नोज आई ट्राई नॉट टू ईट टू मच मीट, आई एम नॉट अ बिग मीट ईटर। मैं या मैं क्या कहते हैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेयरी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन हेल्थ कंसर्न्स आई डोंट लाइक इट। देसी लोग कहीं पे भी होंगे इतना मजाक उड़ाएंगे जैसे कि पता नहीं तुम तो डाइटिंग पर हो, अच्छा इसकी घास पर। मेरी खाला, लव यू खाला इफ यू लिसन टू दिस, but like she made a joke about me, I think मैं शायद इस पॉडकास्ट पे शेयर किया था कहीं पे। हम खड़े थे पिकनिक पे एंड शी इज लाइक तुम तो पत्ते खा लो ना दरख्त के, तुम्हें खाना खाने, हाँ, राइट, आई सेड दिस आई थिंक बिफोर। या कहीं किसी we और टेबल just पे जा, lost one subscriber. we just did exactly। Now we या have मैं, zero exactly, subscribers. और हम खाना खाए बार बार मेरे, अच्छा फिर उसके बाद what happens is then when someone's constantly after you, then I'll start talking about, okay, you know, why organic is better or why certain foods are good, and then it looks like कि मैं भाषण दे रही हूँ, मगर I'm just trying to bloody eat my food। You're trying to explain yourself because they've put on this like क्योंकि pressure आपको on you कि हाँ क्यों कर रही वही हो ना, ऐसे. मैं like let's say for example like have I turned on you and said why are you eating this processed food? हाँ, but क्या if आपको you पता say that to them, you will be the devil of the year. Okay, है ना, you will be so exactly evil, and you will be like, how dare you exactly। अब like मुझसे कोई अगर let's say bring कोई your gora agenda on us. एग्जैक्टली अब कोई बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो अपने बच्चे को कुछ टॉफी वगैरह दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, मेरे हाथों से शायद दे रहे होंगे, मैं दे रही हूँ, मगर मुझे पता है उसके अंदर क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे पड़े जा रहे हैं, लाइक आई एम, मगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, राइट, आई एम क्वाइट। Conscious So about it. what gives you the right to question somebody else's life? Because someone's life is different than yours, you think you have the right to make fun of them or to put them down. So these people, like, and so for all our listeners, if you are in situations like that, know that it's not you, Yeah. it's them, Yeah. definitely. And And you know, that's where you need to walk out of that this relationship is as well, where or another manage it. big red flag. A red flag is when they have the audacity. Okay. It's the biggest red flag is when this person has the entitlement / audacity to question everything you do, to control what everything you do, to think they can and they should, or they have the right to. That is the freaking red flag. And I was just going to say कि audacity से like entitlement जो मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, ठीक है। और जब आप अभी आपने बोला कि देसी लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना एक दूसरे को पुट डाउन करते हैं। पहली बात, अगर कोई आपको, हमने पहले अपने फैट शेमिंग एपिसोड में भी बहुत ये बात की बॉडी इमेज में, पहली दफा आपको कोई मिलता है ना आफ्टर लॉन्ग टाइम या जो भी है, स्पेशली जो क्लोजेस्ट होते हैं ना आपके, उनको लगता है ये उनका हक है कि वो आपको बोल सकते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग दे से, हाँ तुम्हारे बालों को क्या हो गया, तुम्हारे रंग को क्या हो गया, तुम्हारी बॉडी को क्या हो गया, डाइट नहीं कर रही आजकल, ओ मैंने इतनी बड़ी अच्छी डाइट सीखी है, तुम्हें मैं बताऊंगी, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी लेटर, ठीक है, तुम करना, तुम अपने बालों पे ये लगाया करो। भाई क्यों, किसको प्रेजेंट करना है? बिल्कुल। You know, और are we out here just looking at each other's visual features and deciding that this person is right for us because they have long and healthy hair or they look very fit? Is that the criteria for us to decide that this person will be the best fit for us for the future? अभी सारी frames अब सच है ना, तो पूरे घर हिलने लगा है। But how नहीं is बिल्कुल that the सही कह रही, criteria? नहीं बिल्कुल। और दूसरी इस बात मैं कहूंगी, इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि वो क्या कर, लाइक व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर विद देम। क्या वो सारा टाइम दूसरे लोगों के बारे में बात करें, या वो जब दूसरे लोगों के बारे में बात करें हैं, अगर आपका रिलेशनशिप में है तो आप अपने एक्स के बारे में वो कैसे बात कर रहे हैं, या अपने किसी फलाने पेरेंट के बारे में, या किसी, और उनको इफ दे आर टॉकिंग अबाउट देम इन अ नेगेटिव टोन, या इफ दे आर कॉन्स्टेंटली गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल, दैट्स अ रेड फ्लैग। बिकॉज हाउ डू यू नो कि जब आप उठ के जाओगे वो आपके बारे में दूसरे बंदे के साथ बुरी बात Yeah, नहीं gossip करेंगे, जो राइट? करता है बंदा, how is that person a nice person? और if उसको लगता है someone it's puts really you down, secretive with you, exactly, but they're doing the same with other people, dude. अच्छा। और आपको पता है हमारे जो देसी टर्म है ताने मारना, राइट, जो ताने मारते हैं लोग, हमारे देसी आंटियां, हम लोग सब करते हैं, बड़े शौक से एक दूसरे को ताने मारते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू मेरू, मगर मेरी फैमिली में मैंने इतना देखा हुआ, एक्सटेंडेड फैमिली में, राइट, अच्छा मुझे आके ना कोई बड़ा आके बात करेगा कि अच्छा तुम्हें पता है उसने ना मुझे ये बोला तो मैंने उसको वो जवाब दिया। मैं उनकी तरफ देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, फिर मैं कहती हूँ आप उनसे क्यों मिल रहे हैं, Why ये do you पहली hang out दफा with नहीं them? है। Yeah. I'm like मेरी कोई दोस्त मुझसे आके ऐसी बात करेगी, मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। आप
और ये जो बातें होती है इतनी टॉक्सिक किस्म की बातें होती है कि वो सर्कल है. I'm like, how can you trust this individual? Why would you ever be around them if they've उन्होंने आपको ताने मारे हैं, आपको, आपके बच्चों को, आपकी जॉब, किसी भी चीज पे. How can you be around a person like that? Like, walk out, people. Like, I don't know, हम अपने आप को, especially in our desi cultures, में हमने difficult है क्यों to अपने walk आप को, away. क्योंकि फैमिली है या दोस्त हैं या क्या है, I mean, come सोशल on, स्टिग्मा people. बहुत है ना कि यू कांट वॉक अवे फ्रॉम योर फैमिली. ये बहुत बुरा समझा जाता है. आई थिंक ये दे कांट ब्रेक आउट ऑफ दीस साइकिल्स. For people like us, we could give two shits about what other people think about us. Like, I'm sorry. Okay, अगर आपको exactly. Yeah, I all like say to my mummy abu too. I was like, sorry dude, मेरी वजह से अगर आपको मुश्किल होती है बाहर जाना because मैं मुंह फट हूँ या मैं I don't want to meet certain people, मेरी choice है. अगर आपको नहीं अच्छा लगता, I understand, but like we don't always have to agree on everything, you know. You want to meet someone, you want to, good for you. I don't want to associate with them, but Exactly. my parents are supportive. The people I don't want to associate with, they respect that and they also don't associate with it. But I've always said, like, there's a clear boundary and I don't want it to be crossed, so I'm not going to put myself in the same situation again and get hurt, because I'll get triggered, or otherwise I'll do something very disturbing that you guys won't be able to go out in society anymore. Yeah, So no, absolutely. I think मेरी अम्मी भी इस बात से डर गई हुई है, वो मुझे लेके नहीं जाना चाहती है because she knows. I'm like, take me at your own risk. But just generally toxic people, like you know, like जो वो uncles जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने बीवियों के बारे में jokes करने आते हैं और कुछ नहीं करना आता, hella red flag there. तो उनसे, like, those are the people you want to stay away from. फिर those aunties जो like कहती हैं कि बेटा तुम्हें ये करना पड़ेगा, मेरा बेटा तो ये कर रहा है. बेटा, आपका बेटा चर्च बेच रहा है रात को. आपका बेटा पूरे मोहल्ले को चर्च बेच चुका है, ठीक है, और आपको लगता है वो तरावी पढ़ने गया हुआ है, ठीक है. I still remember, like, I once saw on Facebook, like, a couple of people that I was friends with, and this is when people back in the day used to like type on each other's timeline, like post karte the, like messages. Facebook पे ना, the Facebook पे aunties uncles नहीं होते थे जब Facebook था, तो उसपे ना like it's like, yo, let's get drunk and go to Tarawih. Like, wow. Like, astaghfirullah, wow. Like, आप लोग वो ये ना जिनको हमारे माँ बाप आके कहते हैं बेटा देखो कितने अच्छे बच्चे हैं. Seriously, ये वही लोग हैं जो कहते हैं ओह उसने उस दिन ये पहना हुआ था, इसको शर्म नहीं आती. आपको किसने इजाजत दी ऐसी शक्ल के साथ आप घर से बाहर निकले? आपको किसने कहा आप अपनी ऐसी सोच के साथ अपना मुंह खोलें? Yes, exactly. और I would just say कि like, you know, like, एक दूसरी बात ये भी कि watch out for prejudice as well. Yeah. कि हमारी, especially now, I think desi people, like, there's a lot of awareness right now about racism, right? And bias. हम desis इतने prejudiced हैं कि इसकी कोई सवाल, like we all know that हम लोग racist भी हैं, हम लोग prejudiced भी हैं. तो think of that, right? कि वो बंदा किस तरह के viewpoints रखता है, किस तरह से बातें कर रहा है, like किससे कर रहा है, right? Like, और जो हमारे slangs हैं, dirty slangs that we have against people from other, you know, groups, watch out for that, right? It's really important. And I just said that before, but I'll say it again. Like, this is a really big one. Yeah, and I'm thinking कि अभी जो पाकिस्तान का political arena भी है उसमें भी मैं सोच रही हूँ कि जैसे देसी people are like taking extreme sides और बहुत like गंदी बातें हो रही हैं online and like दोस्तियां टूट रही हैं, like एक दूसरे पर गालियां चल रही हैं, overtaking, like ठीक है सबका एक political view होता है, I understand that, हमारा भी है, and of course we will fight for our political view, but in the most respectful and humane way, right? Like, we are not, कैसे हो सकता है कि सारे एक ही चीज पे अग्री करें, फिर तो चलेगी नहीं डेमोक्रेसी. डिबेट होती है टू-वे डिस्कशन से, कन्वर्सेशन से, लड़ाइयों से नहीं. सो और लड़ाइयां, like, where is that taking you? That's nothing. And I feel like that is like manifested not just online, it's in our homes, it's in our drawing rooms, it's on the streets. Like, we need to have a conversation with one another, right? तो आप जब भी किसी ऐसी रिलेशनशिप में ना पे दूसरा बंदा अपना व्यू को ना पे मुसल्लत कर रहा है और आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जवाब नहीं दे रहा है लेकिन बस बोली जा रहा है कि मैं सही हूँ.
walk and why I away. bring this up, why I brought that up is because this one person cannot have a normal discussion about something they're passionate about or something they feel strongly about. So for example, a political affiliation, if they cannot have a respectful and humane conversation discussion about it, that's a red flag. If they are adamant that this is what you should believe in, every time someone says you should कुछ नहीं होता, ठीक है? You can, you want, you तुमने मुझे political science 101 याद करवा दी, जो प्रोफेसर ने पहले दफा बोला था, अगर should किसी भी कुछ नहीं होता. No one can ever make you do things, okay? No one has the right to do that. Yes, you can make informed decisions by yourself and someone can influence it, but जब वो कहना चाहिए यही सही है, यही right है, that is a red flag, and don't listen to them. Major red flag. Boom, red flag. Okay, Mehru, I think हमने बहुत सारे red flags discuss करनी है. कुछ ज़्यादा, I didn't even know कितने होते हैं. हम पूरी की पूरी red flag की दुकान है. And I think one more मैं अपना बहुत बता सकती हूँ, एक आखिरी वाला, trauma dumping. I think मैं कई बार मुझे लगता है कि मुझे vent करना होता है तो मैं कभी भी कहीं भी कर देती हूँ. And then I realized कि शायद इस बंदे को नहीं बताना चाहिए था. लेकिन I try myself to like be very like conscious about this. तो मेरू को तो हमेशा मेरू I'm really sorry. मैं पूरा lecture देख रही हूँ. मेरू मेरे साथ पहले 3 घंटे तालिया मैं बता रही हूँ मेरी active listening skills तालिया की वजह से अच्छी हुई है. I'm just kidding. Within friends, you know, you should be able to share that. And if you don't feel comfortable sharing with me, Talia, then that's a red flag on me, okay? That's about me, not you. So, no, for sure. And like, trauma dumping is a big one. So sometimes you need to ask someone before you're ready to share stuff or whatever's happening in their life. और मैं कहने वाली थी कि I think we will bring this episode to an end. Okay, timing बहुत ही अच्छी रही क्योंकि हमने सोचा था कि हमारे episodes थोड़े लंबे होते हैं, so we'll try to keep them short. Thank you everyone for joining us and listening to this episode. Again, the episodes are available on YouTube and Spotify, and don't forget to follow us on Instagram. Everything will be linked in our description in YouTube and Spotify. And I just wanted to say, if you have any ideas, if you have any red flags that we didn't mention in this episode, please comment them down below or message us privately, which most of you like to message us privately, which we're fine with. I guess you don't want to share your feelings online in front of an audience, but if you want to message us privately, that's totally cool. So yeah, share some red flags and we'll post some things on Instagram to continue this conversation about red flags and green flags. And we also want to say, if you have any ideas for our next episodes or anything you think will be fun to discuss within us both, do let us know, message us or comment it down below. And so as always, even though it's season 2, but the audios never changes. And Talia, are you ready for our big bye? I am. Bye.